फालतू आइडियाज मत दो, मारेगा वो नीचे देगा। मैं ठीक ठाक, मेरी बीवी देख रही है। रणविजय की सबसे खराब आदत है गधा कहीं का। इस आरआरआर का विलेन। Some old uncle was having a great fantasy of his fulfilled right next to us in a theater. said, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मेरे बगल में little uncle was sitting next to me. आपकी टिकट में डिस्काउंट दे देंगे, आपको तो दो शो दिख रहे। How do these two things kind of gel together for you? By keeping Raghu away from other people. मेरे लिए कम से कम प्यार ढूंढने का सफर ही अपनी मंजिल है, वो ही मेरी कहानी है। Even Rannvijay is the person जिनकी वाइफ से वो मिले थे personally, मतलब एक पार्टी पे मिले and that's how their love happened. I didn't realize till then. I was like, अच्छा हम दोनों में भी variety है, मतलब एक online मिला था और एक offline मिला था. At that time virtually एक assault सा हुआ मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। But by luck I met, I reconnected with an old friend. उसने कभी रोडीज देखा नहीं, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा फायदा हो गया मेरा। Where people can turn around and say that कि नहीं हमको प्रेग्नेंट औरत के साथ काम नहीं करना, नखरे होंगे, डिफिकल्टी होगी. And I was so tensed, I swear I was so tensed at that time. And when I spoke to Rajiv, he was like, हाँ ठीक है, okay great, आगे बोलते हैं. और so what are the dates? When are we shooting? And I was like, but I have to tell you, it's just so wonderful to work with people who allow a woman to go through, sorry. Today I'm sitting in the company of not 3 but 4 people. One is an old friend to our future new friends, and one is a soon-to-be friend. So I'm very excited to be sitting in the company of Raghu, Rajiv, and Gauahar. So firstly, welcome to Bollywood Bubble. Thank you. Thank you, Akash. And I have to start by saying, like, you guys have taken the mantle of helping people find love in this generation. From the last 20 odd years, you have been helping a lot of people finding that. Firstly, how did the idea for In Real Love came about? हमारा जो काम है वो रियलिटी शोज़ का है, और रियलिटी शोज़ पिछले 20 साल से ना एक ही तरीके से चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, पता नहीं किस गधे ने 20 साल पहले ऐसा शुरू कर दिया था कि गुस्सा होना है, गाली देना है, और दो गधे थे। किन गधों ने 20 साल पहले ऐसा शुरू कर दिया था, वो अभी तक चला हुआ आ रहा है। तो हमें एक तो रियलिटी शोज़ को नए जनरेशन में लाने की ज़रूरत थी, और दूसरा खासकर डेटिंग रियलिटी शोज़, क्योंकि डेटिंग रियलिटी शोज़ आज की डेट में जो लोग डेट करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में है ही नहीं। वही है कि 10 लोग को ले लो, एक आइलैंड में चले जाओ और गाने वाने बजा दो और लड़ाई वड़ाई करवा दो, बस यही है। तो हम चाहते थे कि एक ऐसा शो बने जो आजकल के जो लोग डेट कर रहे हैं उनकी लाइफ को रिलेट करे। तो जितना हम सोच रहे थे, मेरा यही था कि आज पहली बार जिस तरीके से हम खाना मंगाते हैं वो बदल गया, कि टैक्सी मंगाते हैं वो बदल गया, शॉपिंग करते हैं वो बदल गया, डेटिंग कैसे करते हैं वो भी बदल चुका है। क्या ये ठीक है या गलत है? देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। क्या ये अच्छी बात है, या एक जगह पर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरी जगह पर चले जाओ, ऑनलाइन या रियल लाइफ, इन दोनों में से ये एक दुविधा है जो मेरे ख्याल से हर सिंगल लड़का और लड़की फेस कर रहे हैं। कहाँ से है? मतलब वी वांटेड टू मेक अ शो दैट स्पोक टू द जनरेशन टुडे, नॉट जस्ट ऑफ डेटर्स बट ऑफ व्यूअर्स एज वेल। एंड बट ये मैंने ऐसे बोल दिया जैसे हमने सोचा ऐसा कुछ शो बनाते हैं जो लोगों के लाइफ को रिफ्लेक्ट करे, एंड देन वी केम टू दिस आइडिया। नो, व्हेन अ थॉट स्टार्टेड हैपनिंग, ऑर्गेनिकली हम लोग उस डायरेक्शन में जाते हैं विच इज वेरी रिलेटेबल टू द ऑडियंस। या The one thing I really liked about this concept, na, ki, usually what we see in reality dating shows is that there are a lot of people, and then it's just about getting a lot of drama out of that. Yeah. Right here, we are just focusing on 4 people. Yeah. At least the main focus is on 4 people. they are your entry towards the stories, but Yes. these are not drama on a lot. This is more love stories. Yeah. You'll find that you'll be smiling when you're watching it. By the way, the last show also that you made, I binged that in one night. That was also very different concept and very, very, very amazing. She's talking about skulls and bones. I know. Yeah, but it was also a very entertaining show. Let me just say, it was Thank you. very entertaining. Thank you. But Rajiv, for working with your brother and helping others people find love, how do these two things kind of gel together for you?
by keeping Raghu away from other people so that he can work and they can find love. ऐसी बात नहीं है. पहले तो मैं ये गलतफहमी दूर कर दूं कि हम कोई रिश्ते लेके आ रहे हैं. ऐसी बात नहीं है. हम एक कहानी बताने आ रहे हैं और एक्चुअली मेरे लिए कम से कम प्यार ढूंढने का सफ़र ही अपनी मंजिल है. वो ही मेरी कहानी है. तो उनको प्यार मिलता है नहीं मिलता उसके ऊपर हमारी कोई कंट्रोल नहीं है. ये अरेंज तो हो नहीं सकता. पर हम एक काम करेंगे कि हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी रियल लाइफ भी, एक ऐसी दुनिया बना देंगे जो हर डेटर का फैंटेसी हो. ऐसा एक डेटिंग ऐप जिसमें लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ पीपल एंड लेवल ऑफ इंटरैक्शन टॉप पे हो. ऐसा कभी देखा ही नहीं हो कभी लाइफ में. रियल लाइफ डेट्स ऐसी ऐसी जगहों पे और ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ के डेट्स हों कि हर कोई कहे यार अगला डेट यहाँ करते हैं. ठीक है, ये दुनिया बनाना हमारा काम है. इस दुनिया में उन लोगों को लाना हमारा काम है. उन लोगों का कहानी पैदा करना और वो कहानी बताना, वो है गौहर और रणविजय का काम. And we have seen in the trailer, it's looking very interesting, calm that you are doing, and it's a very noble calm, I'd say. Yeah. But Gauahar, for you, like I think you're one of those people whose love has been kind of captured very beautifully virtually in real life. Yeah. So for you, how important is the virtual world in kind of establishing a romance or making it stronger? Because sometimes you find a connect there, but sometimes it also help it have longevity as well. Yeah, that's exactly what we're exploring, right? कि मतलब जो पहले के तरीके थे, the way you met people, the way you explored that relationship, the way you kind of gave that a shot was very different. और अब इतना ज़्यादा option available है. There are so many apps there, you know, there are so many not just dating apps but other social media apps where there is a possibility of you meeting someone sliding into your DMs, and how you take that forward is completely personal. And that's exactly what makes in real love so relatable and so different from everything else out there. Yes, my love did happen from the virtual perspective, the online perspective, which I had never thought in my life. क्योंकि मैं firstly यहाँ पर जो लिखा हुआ होता था मेरे माथे के ऊपर कि इसके साथ पंगे नहीं लेने, तो मुझे वैसे ही कोई DM में slide नहीं करता था या कोई message नहीं करता था. It was just about meeting personally, and that's how it happened for me. But for the first time, someone who's younger than me had the courage of sliding into my DMs, and not just do that, but sweep me off my feet and get married to me in the next 4 months. And today, mashallah, we're married for over 2 years. So yeah, great experience, virtual or not, it is the truthful experience, and that was my story. Yeah. But here, IRL is about that, exploring people's stories and figuring out, is there a way, is there a better way, which one is the better way, online, yeah, offline, and what works for you. And I think that makes you the perfect fit for being that person who is being the connection between the audience. You know, and it's the so funny that even Rannvijay is the person जिनकी wife से वो मिले थे personally. मतलब एक party पे मिले, and that's how their love happened. Yeah. And for me, it was a part of a promo also, which I didn't realize till then. He was like, अच्छा हम दोनों में भी variety है. मतलब एक online मिला था और एक offline मिला था. तो जब तक हम वो शूट करते थे, मैंने कहा हाँ रणविजय ये ऐसे हुआ था. तो that's when we realized, oh अच्छा हम दोनों में, that's why we probably understand both aspects of it, you know, क्योंकि हमने दोनों experience किया है, and both of us chose to find a forever in two different manners. Two different manners. Yeah. And for all three of you, how was your experience of finding love virtually and in real life? How did it happen for you in real life? I pass छोड़ दो यार. राजीव का जो लव स्टोरी शुरू होता है ना, वो वर्चुअल कुछ नहीं है. टाइपराइटर की बात कर रहे हैं हम. उस टाइम पे फैक्स मशीन थे उस टाइम, समझे, टेलेक्स होता था ऐसी कम दर्जी, और SMS की जगह होता था तार, तार होता था, टेलीग्राम भेजते थे. तो छोड़ दो आप. नहीं ही मैं प्लीज टेल. ठीक है. सो मेरी मुलाकात हुई थी मेरी वाइफ से कॉलेज में. मैं स्कूल से कॉलेज में आया था, तो तब मेरी मुलाकात हुई थी, और तब से अब तक. ये देख रहे हैं इनका हाथ, इतने साल इनकी शादी हुई है, पर इसके बाद 10 साल उससे पहले भी थे ना. हाँ, बड़ी शादी और शादी के हर साल ये एक, जैसे जेल में नहीं आदमी होता है खींच देता है, वैसे ये कंपैरिजन अच्छा नहीं हो रहा है, पर क्या करें. But is that the significance of it? It's a prison tattoo. So every 5 years he'll refresh it. Oh wow.
How cool. That's a unique one. I've never seen that. Actually very unique one. So they've been together, mashallah, 30 years. 30 years. Yeah. 20 plus 10, 30. Yeah. So we have a guest who has arrived No, backstage she's not behind the scenes. वही Yeah. jumping नीचे हिचकी आ रही थी. We'll talk about it. Yeah. So for you, Raghu, how was your love story? Yeah, my life has had its share of ups and downs. Even in my personal life, I was married for 10 years, then I was single. We are a couple. She's a buddy of mine, but we were no longer a couple. At that time, virtually एक assault सा हुआ मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लगता है. Because that really मुझे मैं थोड़ा old fashioned हूँ उस तरीके से, तो मेरे को थोड़ा डर सा लग गया था. But I never thought I'd have a relationship ever again. But by luck, I reconnected with an old friend, Natalie DiLuccio, जो यहाँ की नहीं है, कनाडा से है. उसने कभी रोडीज देखा नहीं. मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा फायदा हो गया मेरा. और मैंने रियली बिकॉज मुझे ना ऐसा लगता था कि मैं कभी डेट पे किसी भी लड़के के साथ हूँ तो वो टीवी देख रही है और मुझे रिक्वेस्ट आते पता है मुझे ये गुस्सा करो ये करो. No way. I'm not kidding. Somebody asked me to hit her and that's a red flag. So मुझे लगता था यार ये I'm going to disappoint this woman, whoever she is. Yeah. Whatever reason she has to talk to me, she's going to be disappointed because I am not that guy she thinks I am. Yeah. Natalie का ऐसा कुछ नहीं था. And she comes from a different culture where dating is a part of life growing up. So the world of dating was opened up to me with her. All kinds of dates, not just movies and dinners, but weekend trips हुआ, gym dates हुए, all kinds of interesting fun, activities that we were doing together, and I really enjoyed it. आपको वो सब इस शो में दिखेगा. That's how I met her. Actually, I met her. Anyway, that's another story. My point is, I met her and dated her for about a year, and then we got married. Yeah. So we have a little inspired from real life in real life. Yeah. No, all good stories have to be based in the real world. They come from life itself. Yeah. And like we don't know your love story. Yeah, of we course. got to I'm know. not repeating that Yeah, for you. that's it. So I was gonna ask, since he mentioned he was asked to gussa karne ko. So what's the weirdest thing you have been asked to do on a date, or someone has done for in front of you on a date? I've told you mine. Yeah. I was asked to hit, like, I rough her up and I said sorry. Sorry, ज़्यादा हो गया. What is the weirdest thing I had on a date? I can't tell. It's really controversial. Not with the person, but it was so embarrassing for me to experience that with the guy that we never actually saw each other again. Because anyway, it was really bad. Some old uncle was having a great fantasy of his fulfilled right next to us in a theater. And I was like so embarrassed by the thing. And the Mata in me jagoed from somewhere, and I went down to the manager of the theater and I said, "ये क्या चल रहा है यहाँ पर?" मैं होता है मेरे बगल में little uncle was sitting next to me. आपकी टिकट में डिस्काउंट दे देंगे आपको तो 2 शो दिख रहे हैं. There is a woman next. I was like, I am embarrassed. मैं पानी हो गई, and then I was like, we were just too embarrassed to discuss that, so we never had another date, another one. और मतलब हुआ भी तीसरे इंसान की वजह से. And I'm like, सोचो इसको क्या ideas आ रहे होंगे? I'm a serious guy हो रहा है. Okay, Rajiv, what's your weirdest story? मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने डेट नहीं किया. ये बहुत हुए. अरे हाँ, ये तो सच्चा इसके जो अजीब सी चीजें हुई ना वो कॉलेज लेवल की हुई और बड़ी अतरंगी हुई है. मतलब लड़ाइयाँ हो जाती थी. So लड़की से नहीं, दिल्ली में थे. दिल्ली तो दिल्ली अंदर बैक इन 90s की बात है या 80 या क्या early 90s. बाहर जाओगे कोई किसी ने कुछ बोल दिया ओके जी. बस यहाँ पे थोड़े से अडल्ट वर्ड्स डाल देते हैं और क्या, क्योंकि दिल्ली से है तो इतना फीलिंग समझ में आती है. But Gauahar, I have to ask you, like, I'm gonna be having a new friend soon. Firstly, how has been this new phase of life? Amazing, like the best thing in. आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितने भी कंट्रीज चले जाओ, आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, आप जो भी एक्सपीरियंस कर लो लाइफ में, लेकिन अगर एक औरत चाहती है ये एक्सपीरियंस करना, तो आई थिंक व्हेन शी एक्सपीरियंसेस इट, एंड आई प्रे एंड ट्रूली प्रे कि जिसको भी वो चाहत है कि वो कभी ना कभी माँ बने, मैं दुआ करती हूँ कि उसको हर चीज़ आसानी से हो जाए, बिकॉज देयर इज नो अदर एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड
that can match up to what a woman feels for this, and so that's how I have felt. But I have to tell you how appreciative I am of these two people, because if they're forward thinking, and I have to mention Netflix too here, कि कितना support किया है इन दोनों ने, especially I will never, I'm sorry, I'm getting emotional, never forget a call with Rajiv once. It's okay. Anyway, not to mention the details, but it's just so wonderful to work with people who allow a woman to go through, sorry, It's okay. go through something as big as this, where people can turn around and say that, you know, कि नहीं हमको प्रेग्नेंट औरत के साथ काम नहीं करना, नखरे होंगे, डिफिकल्टी होगी, जो भी होगा, या ओ विल शी बी आउट ऑफ शेप, और विल यू नो विल, सॉरी, ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और कई सालों से, सॉरी आई डोंट नो व्हाई जस्ट गॉट इमोशनल. You do not have to apologize She's for just anything. keeping up with the tradition of our interviews. Yeah, no, because you know something happened and I had to share it with them at that time when we were starting the show, and I told Rajiv that you know this is the thing, and he said, "हाँ, so okay, let's talk. और क्या करना है?" I was like, "You're okay with like me, you know, having a pregnant, you know, a host on the show, which has got to do with love." Yeah. And you would think that you would obviously want someone extremely glamorous and all of that, because you know obviously it is Netflix, you need to look a certain way, it's an international show, people are going to watch it all across the world. And I was so tensed, I swear I was so tensed at that time. And when I spoke to Rajiv, he was like, it was a con call between him, me and someone, and he said, हाँ ठीक है, okay, great, आगे बोलते हैं, और so what are the dates, when are we shooting? And I was like, कहाँ से आए हैं ये लोग? And especially Netflix also, you know, taking care of me at, you know, shoots and stuff like that, and it's just been wonderful, added to this experience of knowing these gentlemen here, and of course Ran and everybody on the show has been just amazing. Yeah, and while you might have that doubt, but I can say this from myself, from the audience side, and from their side as well. Glamour is still intact in you, no matter which phase of life you are. Thank So you. that is never going away. Thank So you. that is never a question. But is there anything you are missing during the pregnancy, or is what is the most enjoyable thing for you? So I was traveling till last month because I was working non-stop. So अभी एक महीने से I'm Sunday. गौहर के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, गौहर निहायत ही बोरिंग किस्म के औरत है। उन्होंने लाइफ में कुछ मस्ती है नहीं, क्या मिस करेंगी, क्या मिस करोगे यार? मतलब प्रायश्चित करने से पहले पाप तो कर लो, काम करना, घर आना और खाना खा के सो जाना, यही लाइफ है। क्या वो भी अभी चल रहा है? Yeah, but I do miss traveling. I love to travel. Yeah. But I'm sure Zaid must be showering you with gifts as he always does. He's amazing. फालतू आइडियाज मत दो, मारेगा वो नीचे देगा। मैं ठीक ठाक, मेरी बीवी देख रही है। एक मैं बता दूं, मैं तो बता रहा हूं, रणविजय की सबसे खराब आदत है, गधा कहीं का, जब भी वो ट्रैवल शूट पे जाता है ना, वापस आता है, ठीक है, he'll get something for his son Noah, साथ में he'll get something for his wife, okay, he used to get something for my wife, और सबको दे देता। तो थैंक यू रणविजय। मैं और राजीव ना रणविजय को बाहर हड़का देते, तो मजाल है, भैंस की आंख कभी कुछ ले आया तो डोंट गिफ्ट आवर वाइफ्स एनीथिंग। उस टाइम पे था, क्योंकि हम उस टाइम बहुत काम में ही लगे रहते थे यार। उल्लू का पट्टा एयरपोर्ट्स में घूमता था, उसको कुछ दिखता था तो खरीद लिया उसने, और हम पे बनाते थे। He's a sweetheart, but yeah, इस RRR का villain. But that coming together of RRR, like it is so exciting for us, because see, as usual, I have seen the roadies from starting. Yeah. From season 1, have been following it. So for us to see you three reunite is a big deal. Thank you. So firstly, how was that reunion for you three guys? It's Obviously we've been in touch. ऐसा नहीं है कि हमने But साथ में जो काम कर रहे हैं, एक roadies का एक तरीका था काम करने का. It involved travel away from a family and everything, intense experiences. So that was a different phase of life. Yeah. But having said that, we've still in touch. We holiday together whenever we are. We can meet. We meet. So, or obviously there is a respect that of what that guy brings to the table and stuff. So we were always on the lookout of saying, okay, what can we do together? What can we do together? But it was very important because
of people like you who have seen it from so long, it is very important for us to not disrespect that and take Rannvijay on a show that where he doesn't belong, or where the magic will not happen. Yeah. You understand? That was a responsibility. So many times हमने कहा था ये ट्राई करें वो ट्राई करें, एंड यही बात करते थे कि सोच लो यार, मतलब we will associate together now and that will become a news. Is this the show? Well, let's be honest, maybe not. Okay, fine. So then on this show, then we collaborate. मैं रणविजय को भी बोला था साइन करने से पहले, और गौहर को भी बोला था कि over the years ना you have achieved a lot in your careers and people, young guys and girls look up to you. ठीक है, जब ये पहली बार she entered in front of the cast रणविजय के साथ थी, and all the girls just screamed at Gauahar, you know, गौहर का नाम चिल्लाते because they really look up to her. रणविजय का similarly, he has this bunch of boys, ठीक है, वो एक ग्रुप गैंग की तरह घूमते हैं वो लोग, एंड वो ना सबका बड़ा भाई है, तो उसको कोई मना करने वाला नहीं है, वो सबके पंगे वही सुलझा रहा है, तो वो एक ज्ञान बाबा टाइप बन चुका है. तुम्हारी लाइफ में ना आसान हो जाता है एट सम लेवल टू फील दैट यू हैव टू गिव ऑल द आंसर्स. तुम एक्सपर्ट हो क्योंकि तुम उन लोगों के साथ हो जो तुमसे उम्र में बहुत छोटे हैं और उस तरीके से देखते हैं तुम्हें. मगर मैंने बोला था यहाँ पर ना आप किसी भी चीज़ में आप एक्सपर्टीज लेके मत आइए. यू आर नॉट, हर रियलिटी शो में भी ना जज होते हैं जो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं. और मैं बोला था हम एक शो बना रहे हैं जहाँ आप यू BFF बन के आओ, और यू हैव टू गिव देम द कंफर्ट कि अगर वो रोना चाहे तो तुम्हारा कंधा है, और तुम्हें ऐसा ना देखे कि यार ये मेरे को पेलने वाला है. खासकर रणविजय के साथ ना वो एक ऑरा है बिकॉज ऑफ एसोसिएशन विद अस. सो आई सेड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट थिंक ऑफ दिस. वो सब हटा के जस्ट री इन्वेंट योर सेल्फ बिकॉज वी आर री इन्वेंट, एंड दे केम इन एग्जैक्टली लाइक दैट. Yeah, and I have to say we love this reunion and we love this new edition also. मुझे पता नहीं बीच-बीच में ऐसा लग रहा था whenever we spoke about रणविजय कि मैं एडिट में ना ऐसे बीच में एक रणविजय की इमोशनल सी क्लिप डाल दूंगा ऊपर while we are talking about it, and then when he said ज्ञान वाले बाबा then I'll have a halo behind. मुझे एक्चुअली गौहर से डर लगने लग गया. क्यों? बहुत ज़्यादा. क्यों? क्योंकि गौहर ने सोचा था कि मैं लाइफ में रघु राजीव और रणविजय के साथ काम करना चाहती हूँ. शी मेड दिस हैपन, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ. आज भी उसने सोचा होगा कि यार मैं रघु राजीव के साथ रहूंगी, रणविजय मुझे नहीं चाहिए, तो रणविजय कहीं और किसी और देश में अटका हुआ है. ये जो हम बैठे हैं ना, ये इनकी वजह से, इनकी कल्पना है. इन्होंने शी थॉट इट एंड इट हैज हैपेंड एग्जैक्टली लाइक दैट. आई एम सो स्कैर्ड. कभी मेरे बारे में इन्होंने कुछ उल्टा सीधा सोच लिया. आप बस ये सोच लो कि लोगों को ये शो बहुत पसंद आएगा. अरे बहुत पसंद आएगा, हमें ट्रेलर से बहुत पसंद है. एंड आई एम अ वेरी गुड जज व्हेन इट कम्स टू इट. Oh, thank you. आई एम द जज ऑफ रियलिटी शोज फ्रॉम द आउटसाइड. बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. व्हेन आई एम विद गौहर, नो मैटर wherever we are, and it just, the time just flies, and now we have 2 more new amazing additions to that team up. So thank you so much for giving me this time. Wishing all of you lots of love and luck for in real love and everything you do in future. Can't wait to see more of you on and off the stream. And thank you so much for Thank this. you. Thank you. Thank you so Thank much. you, Akash. Always a pleasure. आपको Okay, बाद में. Yeah. Wow. Hi, I'm Rajiv Lakshman. I'm Raghu Ram. Hi, I'm Gauahar Khan, and you're watching us on Bollywood Bubble.